नमस्कार वीएम क्लास में आपका स्वागत है। मैं विपिन आपका वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाले नर्मदा रिवर का ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और झेलम नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट अनूपपुर जिले से ही है। जी, ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। चलिए हम अपनी सीरीज कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो है ESE की फॉर्मूला सीरीज चल रही थी मैथमेटिक्स 07। ये रहा कैनवास के ऊपर। हम देख रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ओवर दी curly bracket function of t is equal to integration 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt, which is equals to function of fs. Now unit step function u over the t minus a is equals to 0 and 1, whether the t is less than of a and t is greater than equals to a. Now unit impulse function which is del of t. Now integration over the ax sine of bx dx is equal to e raised to power ax a square plus b square a sine bx minus b cos dx, right? Now लाप्लास के फॉर्मूलास। लाप्लास ऑफ 1 का होता है 1/s। लाप्लास ऑफ t का होता है 1/s स्क्वायर। लाप्लास ऑफ t की पावर n का होता है फैक्टोरियल n अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1 और गामा n प्लस 1 डिवीज़न ओवर दी s की पावर n प्लस 1 लाप्लास e की पावर at इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a। लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस at 1 अपॉन s प्लस a। लाप्लास ऑफ साइन ओवर दी at इज इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कॉस at s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ लाप्लास साइन hat a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लाप्लास ऑफ cos hat s by s square minus a square. Then Laplace of u over the t minus a e की पावर माइनस as by s। Laplace over the del of t 1 Laplace of f of t 1 upon 1 minus e की पावर माइनस ts
इंटीग्रेशन 0 से t e की पावर माइनस एस टी f of t dt, where ft is a period with time t. Now, properties of Laplace. First one, our Laplace of function of t is equal to f of s. Then Laplace of e की power at f of t is equal to f of s minus a. अगर Laplace of function of t is equal to fs, then Laplace of t की power n f of t minus 1 की पावर n d की पावर n d की पावर ds की पावर n f of s. Third, Laplace of function of t is equal to f of s. Then Laplace of function of t by t is equals to integration s tends to infinity f of s ds. Fourth one, Laplace sin t by t cot inverse s, or Laplace of sin at by t cot इनवर्स एस अपॉन ए के जो है ना डेरिवेशन प्रूव्ड है, हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर ले रहे हैं, राइट, कीप इन माइंड. नाउ लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी एफ ऑफ एस, देन लाप्लास इंटीग्रेशन 0 से t डॉट 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 0 से t f of t dt n x times 1 by s की पावर n f of s n f times जब होता है. Now, sixth one, Laplace of function of t, Laplace of y function of s, then Laplace of y dash s y minus y of 0 y double dash s square Laplace of y minus s y of 0 minus y dash of 0 Laplace of y triple dash s cube Laplace of y s square y of 0 minus s of y dash of 0 y double dash of 0. Now, number of 7th, Laplace of function of t f of s, then limit t tends to 0 f of t limit s tends to infinity s of f of s limit t tends to infinity
f of t limit s tends to 0 s f s. Note it down. Sine of I theta I sine and theta. Keep in mind, keep this, remember too. Now we have to further move ahead. It is completed as Laplace transform. Now moving ahead, complex variable. Now here two things is needed. Imaginary part and real part. It is point x, y, point R, angle made with this horizontal theta. Now from the horizontal x, from the vertical distance, that's a y. Complex variable z is equal to x plus iy types. Now z is equal to r times of cos of theta, I of r times of sine over the theta. Z is equal to r e to the power I theta. R is equal to mod of z is equal to square root of x square plus y of square. Now argument of z is equal to theta is equal to slope tan inverse of y over the x. Now 1 plus omega square is equal to 0. Very important property. Cube root of unity की अगर z1 z2 lies on right half of plane है तो arg argument of z1 z2 is equal to arg of z1 arg over the z2. arg of z1 divided by z2 is equal to arg z1 minus arg over z2. Keep in mind, remember these formulas are directly to be asked. Now what is the condition for analytic function? Now we have to move ahead. What is the function of analytic function? Here analytic function is to be ux is equal to vy and uy is equal to minus of vx. These are the conditions for the analytic
ux, vx, uy, vy are continuous or continuous. These two are to be condition for analytic. In the case of function of x u plus iv analytic function, then u over the xy, v over the xy are orthogonal, and u and v are harmonic function of x and y. हार्मोनिक का केस कब होता है? हार्मोनिक u over the xx, u over the yy is equal to 0, v of xx plus v of yy is equal to 0. Keep in mind, keep this is to be remember for analytic function. Now there is a two cases for Milne-Thomson method. Milne-Thomson f of z is 1 is loading when x y इसका v का is given, then f dash of z u over the x plus I times of vx, u of x minus I times of uy, which is u over the y minus v over the x on integrate f dash z by replacing x is equal to z and y is equal to 0, 0. In the case of second scenario, when v of xy is given f dash of z ux plus ivx vy plus I times of vx. Here ux is equals to vy. एक बार u का फंक्शन दिया हुआ है और एक बार v का फंक्शन दिया हुआ है, तो here बहुत ही सिंपली put x is equals to z and y is equal to 0 and integrate. Then we have to get the required solution. Now here we have to need it Taylor series. Expansion is to be needed. F of z is equal to f of z naught plus z minus z naught, f dash of z naught plus z minus z naught का square upon factorial of 2 f double dash of z naught plus 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 Lorentz series. Here we have the analytic as well as the principal part is to be there. F of z is equal to summation of n is equal to 0 to infinity an z minus z naught raised to power n plus summation of n is equals to 1 to infinity b upon z minus z naught की पावर n. पहला वाला फेज होता है analytic part. On the second phase we have
principal part right here. Now there are few conditions are to be there. अगर आपका प्रिंसिपल पार्ट जो है एब्सेंट होता है, then z not is removable सिंगुलर की कंडीशन में होता है. अगर if there are infinite part infinite principal part, then z naught is essential singular होता है. Removable singular, essential singular. If there are finite मतलब जितना हम कैलकुलेट कर लेते हैं टर्म ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, then z naught is a whole. Z naught is whole, then f of z is not analytic to z naught. Right here. Now we have to calculate what the residue over here. Residue fz Laurent series x1 fz coefficient of 1 upon z minus a is called residue of f of z at z is equal to a. fz किसमें लॉरेंट कोफिशिएंट 1 upon z minus a, f of z is equal to a. कंडीशन के लिए हम रेसिड्यू देखेंगे. पहला सिंगल पोल के लिए z is equal to a, f of z के लिए रेसिड्यू f of z is equal to कंडीशन ए के लिए लिमिट z टेंड्स टू a z minus a f of z. Now if z is equal to a is a pole with degree m, then residue f of z limit z tends to a 1 upon factorial m minus 1
b raised to power m minus 1 upon dz की power m minus 1 z minus a raised to power n f of z डेंसिटी z बराबर a के लिए ये पूरा फंक्शन डिफाइन होगा. Right. Now, two more important thing. Then we have to resume this chapter. CIT, Cauchy integral theorem. We have to need one of the circle is to be needed. It is needed. The point are lie inside this. No pole inside the curve and on curve की कंडीशन हम देखते हैं. To cyclic integral over the f of z dz is equals to शून्य. एफ जेड क्या एनालिटिक है, एफ डैश जेड कंटिन्यूस विद इन एंड ऑन द सिंपली क्लोज कर्व. फॉर्मूला तीन कंडीशन जो कि बेसिक होती है कॉची इंटीग्रल में. पहला एफ जेड इफ एफ ऑफ जेड क्या हो, इच एनालिटिक within and on boundary of simple closed curve C. Then hashtag A जो है is a pole inside with degree 1. Cyclic integral fz over the z minus a d times of z 2 pi I 1 f of a. Now for the case of second category, A is the pole inside with degree n plus 1. Now cyclic integral over the f of z divides z minus a n plus 1 dz 2 pi I upon factorial n d by dz and f of z. Z is equal to condition over the
1 के लिए। इजी। चलिए यहीं तक रखते हैं आपका सेशन। वीएम क्लास को साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से कामना है हमारी। थैंक यू गाइस।